So in this example, we are going to learn like what is difference between trigger.new map, trigger.new and trigger.old. Okay, I'm going to implement a trigger on account object, context variable, trigger, something like this. On account. Okay, so yeah, so in this one, so we are going to write debug statement, and in debug, so I'll write trigger.new. So trigger.new, and in this trigger.new, I'll write some of the okay. So this is my trigger.new, and I'll implement and every trigger.old. I'll write new map. Write old map. Okay, so now I'm going to debug log. Let me delete all the debug logs, whatever existing debug log is already created. So I want to check in before insert. Now I'm checking in the before insert, so what it is returning. Then we will check before update, then we will check after insert, after update, after delete, after undelete, and all. Okay, so now I'm going to insert the record. इसने बोला कि we need to create a new records on account object. Now let's see what it is returning. कौन सा हमारा blank आता है, कौन सा हमारा blank नहीं आता है. Okay, this record has been created. Now let's go to debug log. Okay, so now you can see trigger.new. It is, we are getting the all the details, but id is null. id is null in trigger.new. So in trigger.new, let's make the notes. Trigger.new, it returns list of new record, but id is blank, is null. We can say null. Okay, it's true. If someone will ask you what is the value of trigger.new in terms of before insert, it's a before insert. One second. Before insert. Okay, so now we have multiple things here. Trigger.new map, trigger.old, trigger.new map, trigger.old, and we have trigger.old map. Okay, so the same thing we will have. Okay, so we have before insert, we have after insert, or before update. We can make it before update. This is after insert. This is after update. It's a before delete. It's a before delete. It's a after delete. It's a after undelete.
समझ में आ रहा what we are trying to do? So I'm just going to explain what is it is going to insert. अब अपने को trigger की value क्या मिलती है? So this is very important things which I'm trying to explain now. So now we are just going to update this value. So what is the result for this one? So you are checking like trigger.new के scenario में हमारे को क्या मिल रहा है? ID is null. Yeah, definitely ID is null. Trigger.new में क्या मिल रहा है? Trigger.new is null in terms of trigger.old is null. Trigger.old is null. Where is trigger.old? It is null. So we can update it null. Trigger.new map, what it is returning, it is also bringing a null value. Trigger.old map, it is bringing the null only. So आप आंसर कर सकते हो ना अभी बिफोर इंसर्ट के सिनेरियो में क्या रिटर्न करता है ये, राइट? What it is returning in terms of before insert trigger.new. So now let's go to before update. Let me delete previous debug logs and let me just going to update this same record. Sorry, it is not returning anything. You know why? Because we haven't mentioned anything on the context on the an event. So we need to write it before update. Before update, after update, after insert, after update, before delete, ठीक है, हमें सब के सब लिख दिए। क्या इशू है? delete after, okay, before insert, before update, after insert, after update, before delete, oh sorry, ठीक है, ये हमने सब लिख दिया। तो if I'm going to update the record, now let's see what it is returning. Now you can see we are updating the old record, right? We are not updating the new record. We are updating the old record. So you know, in trigger.new, it is returning the value trigger.new. Yeah, we are getting the ID. It return the list of new records. It return the list of new records. List of new records. We can say list of a new record trigger.new return the list of new records. Whatever records we are going to update, that is, it can be value can be changed, replaced. It means it is a new records, we can say. So old record is also we are getting. So we can say here list of old records. It is returning list of old record. It is returning. ID is not null. Okay, here we can say it is returning the, oh sorry, it is a new record. So new record key value pair. Key value pair. Key value pair means ID, whatever account do we have. So let to do that, we are it is returning key and value both. Okay, so key and value both it is returning. So now if we'll go to trigger.new map, so it is also returning the like list of new records. Sorry, it is an old record. So this is a new, yeah, this one is ID and these are the values. So this is new map and this is old. So it's a like open return the list of old record. Okay, so it is return the list of your old record only, old record की value pair. तो सिमिलरली आप अपने को बाद में बनाएंगे सब, तो मतलब जल्दी जल्दी कर लेते हैं. सो नाउ आई एम गोइंग टू इंसर्ट द रिकॉर्ड अगेन. इफ आई विल इंसर्ट द रिकॉर्ड अगेन एंड आई विल चेक आफ्टर इंसर्ट के अंदर क्या अपडेट कर रहा है ये. इफ आई एम गोइंग टू इंसर्ट अगेन, सो व्हाट इट इज रिटर्निंग. ठीक है, तो आफ्टर इंसर्ट के सिनेरियो में तो मतलब मुझे क्रॉस ऑब्जेक्ट के अंदर चेक करना पड़ेगा, राइट? सो नाउ लेट मी जस्ट ट्राई टू सी बिफोर अपडेट ना, सॉरी बिफोर डिलीट. लेट मी जस्ट ट्राई टू डिलीट दिस रिकॉर्ड.
ठीक है, अपना ट्रिगर डॉट न्यू आया नहीं आया क्योंकि नया रिकॉर्ड नहीं था, सो वी हैव डिलीटेड ओल्ड रिकॉर्ड ओनली, राइट? वी हैव ओल्ड वैल्यू ओनली, वी डोंट हैव न्यू वैल्यू, राइट? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? एवरीवन इज गॉन, या आ रहा है। ठीक है, कूल। नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, ओके आ रहा बोल रहा हूँ। ओके ओके, ठीक है। सो और यहाँ पे अपना न्यू वैल्यू आया, और नाउ विल गो टू अनदर वन। सो वी आर नॉट परफॉर्मिंग द ऑपरेशन इन द क्रॉस ऑब्जेक्ट, सो वी आर गोइंग टू बिफोर डिलीट हमने चेक किया, ठीक है। सो नाउ लेट मी ट्राई टू अनडिलीट द रिकॉर्ड्स एंड लेट्स सी व्हाट इट इज रिटर्निंग। Okay, now let me just try to undelete the record from recycle bin. Sorry. So whatever record we have deleted, so let me just undelete this one. Okay, so trigger dot जब मैंने किया तो old value is blank now. Old record is not, this is a new record because it is coming in the object level newly again. ऑब्जेक्ट में आ रहा है, अनडिलीट कर रहे हैं, तो अनडिलीट का मतलब ये है ना, जहां से उठ के गया वहां पे दोबारा वापस आ रहा है, नया रिकॉर्ड आ रहा है, सो दैट इज न्यू रिकॉर्ड, ठीक है। सो दिस इज अ थिंग लाइक ट्रिगर डॉट ओल्ड एंड ऑल विल बी फॉल्स ओनली। आई होप दिस इज सफिशिएंट फॉर दिस वन, लाइक ट्रिगर डॉट न्यू ओल्ड एंड ऑल। सो इफ एनीवन विल आस्क यू, सो यू कैन एक्सप्लेन इन दिस वे, ठीक है। ये चीजें होती हैं भाई। हाँ भाई, आई थिंक दैट्स सफिशिएंट फॉर टुडे। ज्यादा हो जाएगा, so that would be problem, I think so. So again we are going to discuss about some database classes, like even I will not go in that much depth, but yes, कुछ थोड़ा बहुत बता देते हैं। So let's say I have contact object, you know, like we have contact object. If I want to delete all the records from the contact, or if I want to insert some of the records in contact, okay. So if I want to delete, so what will I do? I will query all the contact. Okay, so now if I will do delete on list, I'm doing like this. I'll click on execute button. So it is throwing some exception. I don't know what is exception, but like if I'll see this one while the execution, then there will be lots of cause, like I'll face some of the issues, because if my Apex class is breaking, 1 second. So let's say if my Apex class is breaking, so my complete transaction will be break that time. Even none of the record will delete. So now if I'm deleting, so because of one exception, my complete transaction is stopped because of one record only. So, but if let's say I have total 100 records and one record is failing, so my complete 100 record is also failing to, like we will not be able to delete because of that, due to that one record. But scenario should be like this: if my one record is like getting the exception, my complete, it should not impact to my complete transaction. Like only one record should not be deleted and 99 records should be deleted. It should, if you want to do like this. समझ में आया क्या बोल रहा हूँ? जो मेरे 100 रिकॉर्ड्स, 100 रिकॉर्ड में से एक भी रिकॉर्ड फेलियर हो रहा है, तो मेरी पूरी ट्रांजैक्शन में इंपैक्ट करेगा वो। कंप्लीट रिकॉर्ड्स मेरी पूरी 100 रिकॉर्ड डिलीट नहीं होंगे, क्यों? बिकॉज ऑफ दैट वन रिकॉर्ड। बट इन केस मुझे 99 रिकॉर्ड को डिलीट करना है और जो एक्सेप्शन वाला है उसको पड़ा रहने देते हैं और जो डिलीटेबल है उसको डिलीट कर देते हैं। सो व्हाट वी विल डू, डेटाबेस डॉट डिलीट ऑन लिस्ट एंड माई विल मेक इट फॉल्स। अब फॉल्स से क्या मतलब, फॉल्स से क्या मतलब है? फॉल्स का मतलब ये है कि भाई जो भी रिकॉर्ड्स अब एरर वाले रिकॉर्ड है, वी आर मेकिंग इट फॉल्स।
और जो ट्रू करेंगे तो इट विल ब्रिंग ओनली एरर रिकॉर्ड ओनली, लाइक सेम एक्सेप्शन आएगा, इट इज ब्रिंगिंग ओनली वन रिकॉर्ड. If I'll make it false, then it will delete all that records which is in the database. So you can see, so we have multiple record in the database. If I'll query on the database, so let's see. So select ID name from contact. We have total 206 record. ठीक है. If I'll make it false, so जो मेरे डिलीट नहीं होगा, जो एक्सेप्शनल रिकॉर्ड है वही बचेगा, बाकी वाले मेरे डिलीट हो जाएंगे. If I'll click on execute button, now my transaction is not failing, right? It is not failing. Now let me just refresh. My 206 से record delete हो जाएंगे. It will be 2, 3 or 1 record, something like this will be there. Let me re-execute this one. 2 record is there only. Rest of the record is deleted. If I'll try to delete this 2 record also manually, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, एक्सेप्शन पक्का आएगा ही आएगा इनके अंदर. मैं मैनुअली भी इनको डिलीट नहीं कर पाऊंगा. I'll click on this delete button. So now I'm not able to delete this one. Deletion problem, right? It might be any issue. मतलब मुझे नहीं पता क्या इशू है, वो मुझे देखना भी नहीं है. ठीक है. जो मैं ऐसे इशू देखने लग गए, लेट्स से आई हैव 1000 रिकॉर्ड्स, कितने रिकॉर्ड का इशू मैं देखूंगा. सो बट अवर एग्जीक्यूशन प्रोसेस शुड बी लाइक दिस, कि अपने को फॉल्स करना है, अपने को वो रिकॉर्ड डिलीट करना है जो डिलीटेबल है. एंड इट इज नॉट ओनली फॉर डिलीट ओनली. इफ आई वांट टू अपडेट द रिकॉर्ड्स, इफ आई वांट टू अपडेट द रिकॉर्ड्स, अपडेशन नहीं हो रहा है मेरा, एक रिकॉर्ड अपडेट नहीं हो रहा है, मैं डेटाबेस क्लास यूज नहीं कर रहा हूँ. सो इन केस मैं सिंपल क्लास मतलब सिंपली हम इसको अपडेट कर रहे हैं. जो भी मेरी कॉल लिस्ट है, आई एम अपडेटिंग दिस वन. लेट्स से व्हाइल अपडेशन, सो देयर इज काइंड ऑफ सम वैलिडेशन एरर और इट माइट बी एनी अदर इशू. बट मुझे वो अपडेट करने हैं जिसमें एरर नहीं आ रहा. जो एरर आ रहा है तो चल छोड़ो उसे, जिसमें एरर नहीं आ रहा है एटलीस्ट उनको तो मैं अपडेट करूं. जो मुझे अपडेट करने हैं, देन आई विल यूज database.update and I'll use call list and I'll make it false. Similarly, if I want to insert the record, if I want to undelete the record, कॉन्सेप्ट समझ में आया? Yes, अमर समझ में आया. ठीक है. तो दैट्स व्हाई वी यूज. सो अब ये आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इंसर्ट एंड डेटाबेस डॉट इंसर्ट. सो यू कैन से insert is a DML. If any of the record will failure, my complete transaction will be stopped. But in database dot insert is a kind of partial DML. Okay, got it. ठीक है. So that's the answer for this. Anything else?